टॉपिक्स को करने के लिए जो काम करना होता है, अगर लीडरशिप क्वालिटी भी है तो है इन 15 टॉपिक्स के लोगों को ये कहना दैट आई एम ऑलवेज accessible to all your personal or professional problems that no one can solve for you in the given time, within deadline. इतना इंटेंट काफी होता है. अगर इंटेलिजेंस है, स्पॉन्टेनिटी है और लीडरशिप है तो एक्चुअली में ये कर भी लेंगे 15 टॉपिक्स के अक्रॉस. बट ये चीजें चाहिए, इसके बिना नहीं हो पाएगा. तो ये चीजें के साथ मैं 15 टॉपिक इसलिए हैंडल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास 14 घंटे हैं ऑफ वर्क, 14 hours. On an average 1 hour is enough from you on one topic, primarily because of this. Right. This itself covers for this. This will be something more than that. So primarily it is because of this, and if I am getting some question, I am instantly answering. I don't make people wait at all. सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं, ऐसा होता है सब रखा हुआ है कॉस्मिक माइंड के ऊपर. मेरी सारा चक्र यहाँ पे है. Out of the chakras that we talk about in the body, the one which is over here has something profound to do with the spirit realm, which is not physical at all. Right. And all of that which is considered time and space in the topic of time can also be described as memory. Okay. If seen through the highest lens of physics, it would be felt as a pattern of memory of the whole cosmic mind. So the memory is something that's already there. One has to latch onto it immediately, like a computer does. Brain is like that. Its job is to latch onto that. To catch where that answer is and bring it. So this is what spontaneity means. That one had that thing which is impromptu about the mind. Intelligence is that it immediately has the answer. Right. But it only happens because of the intent, because the intent creates that structure in which such memory can be housed. Right. So I can handle one topic in 1 hour in a day, so I'm able to attend to everybody. What it really takes is communication skill. Right. After all of this, and it takes understanding of the projects from user perspective. That's it. इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. ये ड्राइविंग फोर्स है. इसी में मुझे कोई खास जानकारी नहीं चाहिए किसकी क्या एकेडमिक स्किल्स हैं, किसकी क्या प्रोफेशनल स्किल है. ये एबिलिटी है और ये है और ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा. ये स्पिरिट होनी चाहिए. अभी 15 टॉपिक के लिए 15 घंटे एक दिन में चाहिए होते हैं. एक टॉपिक के लिए 1 घंटा काफी है. ये 1 घंटा सबके पास है. वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास ये 1 घंटा नहीं है कोई सही चीज करने के लिए, कोई एक बड़ी विराट सही चीज. So the big one right thing can be done just with this 1 hour. So this 1 hour of your life every day, if you can bring out, then I am creating it anyway. If you bring this 1 hour out to ensure that this is happening correctly, independent of me. If you are told you can be affirmative, authoritative, then I can see you are willing to be. Some people just do not have that quality even after being given the rights. That lead man, you have the authority. I am giving you the authority. This is the size of this authority means nobody can question you except me. So if you can take that, then you will ensure that the communication skill, by this I mean that which is
the ability this ability, Nike, just do it. Right. This ability, if one has and has people to lead, then it can be done. Just this ability is needed, just do it. कर अपने को भी ऐसे ही करवाना है, दूसरों से भी ऐसे ही करवाना है. तो 1 घंटे में एक टॉपिक तो हैंडल हो जाएगा. जिसमें तुम्हारे पास ये तुम्हें ये इस पोर्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि Manu and Kali are a bit soft for that which gets things done. That's why administrators are tough people, coaches are tough people. They're not softies. So I don't want that which, because of the work being done in AdvisorNK.com, the holding company of OnlyStartups.com, which is the brand that holds, wholly owned brand that wholly owns all the products that you know about. These 3 products are 3 because we were smart enough to know that this should be the way to make projects get completed quickly. Right. The flow of it is actually one flow. It for many could have been just one product. Right. If they were old school ways of building ERP, you understand ERP? Meaning याद नहीं मुझे. Or CRM? Or customer relation manager? Yeah. Okay. Let's say these enterprise relationship something? No, enterprise resource planning. Sorry. ERP is used by big companies to keep their entire organization together. So ERP is made over a long period of time, and then something like SAP comes out. Right. Now you know what I'm talking about? SAP, the software. Software, yes. Yeah. So those are old school ways. They're very relevant. But I'm saying that earlier softwares would be built like that. A large problem solved in one go. But now we're splitting into 3. But it is one topic. So if you can continue even after you're gone, this 1 hour engagement, which is sum total of all the pings on WhatsApp. Okay. Notifications. Right. WhatsApp पे notifications जो आते हैं टीम के ग्रुप के अंदर, उसको अटेंड करने का टाइम बता रहा हूँ मैं. 1 घंटा लगता है एक टॉपिक पे. मेरे को बहुत सारे ग्रुप हैं, बट मैं देख पा रहा हूँ कि मैं एक टॉपिक पे अटेंड करने के लिए 1 घंटा दे रहा हूँ. और बाकी मेरी टीम है जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ ताकि वो काम हो पाए. तो ऐसे मैं पूरे दिन भर में अगर 14 टॉपिक्स है तो मुझे 14 घंटा काम ही करना होता है. तो पिंग्स ऑन व्हाट्सएप इन टॉपिक्स में अटेंड करने के लिए 1 घंटा चाहिए, और चैलेंज जहाँ पे अटेंड करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ ये होगा कम्युनिकेशन. बिकॉज इंसान को पता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करना है वो चीज़. ये चीज़ कमी लग रही है प्रोडक्ट में, या ये इंस्पिरेशन हमें मिला इंटरनेट से और हमें यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट में. तो वेंडर, ये कला मेन है. द स्किल टू गेट द वेंडर टू डू maybe that which was beyond the scope of his work, but it didn't need much time or resources from him to do. Right. If we communicate effectively, then they do it. There's a factor of relationship. So relationship is not just, head bowed down like softies. Relationship is we understand we hold merit even in your life. We hold some advantage and benefits for you in your career, in the growth of your organization. It may not just be a factor of what we are bringing to you today as a product to do. There may be like countless big opportunities coming through us to bring for matters of India. So, and for them it's a factor of what kind of relationship they deliver. Now, this is the reason why if I will say something, they will attend to it. This could also be the reason if you say something, they will attend to it. It's a matter of how we show that we are one. Then they know that anybody with them, then it becomes easier for Manu and Kalidas also to not come. Guruji, this is the in a slow speed of speaking. By that time, I would have finished conversations with 10 people, but they will say it without conviction and confidence, without knowing that they will be able to say something to the other and have it be done. It's a fucking burden on my mind when I am hearing people or watching people communicate like that.
because I know they don't even need to say something. I'm already burdened because I know fuck तुमसे तो होना ही नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा. तो ये चीज़ मुझे सॉल्व चाहिए to entirety of the journey of the product forward, because अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गूगल है या अल्फाबेट है या रिलायंस है या टाटा है या कोई भी भारी कॉन्ग्लोमरेट है, तो वो काम इसलिए कर पा रहे हैं इतने सारे टॉपिक्स में क्योंकि वो चेंज बनाते जा रहे हैं. राइट. तो उनको भारी सबसे ज्यादा फंडामेंटल ट्रेनिंग देनी है. वो सब कोचेस हैं, टीचर्स हैं, लीडर्स हैं, वो ट्रेन कर रहे हैं इन लोगों को आगे की चीजों हैंडल करने के लिए. वो ये भी ट्रेन कर रहे हैं कि अगर काम ज्यादा हो गया है तो अपने नीचे और लोगों को जोड़ो. पैसा दे रहे हैं, जोड़ते जाओ, लोगों को ऐड करते जाओ, जो जितना डिजर्व करे उसको वो मिलेगा. पैसा ही नहीं दे रहे. हम आते हैं इस मेन टॉपिक पे कि ये दो लड़के मनु एंड काली, इनके थ्रू एक चीज होती है, हम कमरों में बैठ के चीजों को इमेजिन कर पा रहे हैं. उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है. अब तो दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है उन टॉपिक्स के लिए भी जो टॉपिक्स में उस तरीके से अटेंड नहीं कर रहा था जिस तरीके से आई हैव टू अटेंड द टॉपिक ऑफ क्रिएटिंग बेटर लीडर्स. वो टॉपिक था कार्बन एमिशन. अब मुझे उसके लिए भी किसी की जरूरत नहीं है. आई कैन लुक इनटू द बोथ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन द प्लैनेट विदाउट हैविंग टू गो एनीवेयर फॉर इमेजिनेशन. व्हाट आई नीड इज फुल एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम द मोमेंट आई कमांड इट, इवन टू द पॉइंट दैट आई एंटर ऑफिस एंड माय लैपटॉप इज रेडी विद द स्क्रीन दैट आई वांट ऑन इट, because I can communicate it. Then on the way in an auto, I will already communicate it. Please put on my laptop with the following on screens on it. So it took me 2 seconds instead of for 30 minutes to attend to a new laptop that has been put on my table with the kind of information stuff that I need on it. So I really delegate, and I delegate extremely quickly, and I delegate to people who are not even a part of my company. So all of this that is happening, let's say the video, the content on the website, all of this helps my team to show that Guruji has already expressed it. You can watch it in the video, and that's why you will see now that we are going to be more affirmative, and we clearly know what kind of values we are going to bring to you. Please make sure you bring the same kind of values to us too. For example, QA, I asked him, can we continue with this amount further? We build an in-house team. So he said, yeah, the problem, Khalidas told me, the problem is such a gentleman. He simply said, Guruji, the problem is that they are giving us messages of this APK, that APK, without even looking at the problems that are very visible to the eye, even to them, but they don't fix it. They just send it and waste our time on it. So maybe they are not taking our value of time that seriously, that they are giving a shitty outcome, and then we have to give them feedback, and then they correct it. That's not a problem. So I said, I don't want to work with a team like that. Right. So it's their loss. I will continue the product elsewhere. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, 2-3 हफ्ते के काम है अभी जो हुआ है. So ये सारे लोगों को इन दोनों ने मैनेज करना है. तो बेसिकली वेंडर्स हैं, उनको मैनेज करना है. उनको मैनेज करने के लिए एक प्रोडक्ट है, वो ये है, ये फ्लो. उनको मैनेज करने के लिए एक हफ्ते में एक बार उनसे बात करनी होती है. मेरे लेवल पे अगर कम्युनिकेट करने लगे तो यही करना पड़ेगा बस. 1 घंटा भी पूरे दिन नहीं चाहिए, पर ये 1 घंटा अगर इस डेडिकेशन के साथ दिया कि हमें अपने वेंडर्स को टाइट रखना है, उनको ये ना लगता है कि हम ढीले हो गए तो वो भी ढीले हो जाए. और टाइट रखने का मतलब ये नहीं कि जब के मैदान में आके हमारा पीछे हो रही है. बस प्रेजेंट है, एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, रोज आपके साथ कॉन्वर्सेशन जरूरी है. We are breathing on the neck. बोलते हैं हमें पता है कि लोगों का ध्यान है, otherwise they start. Correct, absolutely. So ये करना है, 1 घंटे करते रहो. तो मैं ये सोच रहा हूँ 20% जो कोई भी अच्छी कंपनी जो बड़ी होती है वो 20% ESOP देती है. और इंडिया में बहुत कम कंपनीज देती हैं, और नहीं होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, ये तो रूल होना चाहिए. थोड़ी और पावर बढ़ती जाए तो मैं ये सब पॉलिसीज पार्लियामेंट में डलवाऊंगा. तो कब जाएंगे कैसे आएंगे पता नहीं, लेकिन ये पता है कि पॉलिसी मेकिंग में हमारा बहुत बड़ा रोल होने वाला है. क्योंकि बोलना आता है, जिसको बोलना आता है वो पहुंचा देगा उस बात को जहाँ पे उसको पहुंचाना है. तो ये 20% इक्विटी तो गिवन है. तो ये 20% इक्विटी अभी मेरे पास 2 लोग हैं जो मुझे डिजर्विंग लग रहे हैं, जो फुल टाइम दे रहे हैं. ये फुल टाइम लोगों के लिए 20% दे दिया. अब इनका काम है इस 20% को डिस्ट्रीब्यूट करना.
उस टीम को जो इनको एनेबल कर रही है, उस टीम में तुम भी एक हो, तो तुम इन लोगों को एनेबल करते रहो, इन लोगों को अटेंड करते रहना जाने के बाद भी। अभी मतलब ये 20% मेरे पास मेरे फुल टाइमर्स के लिए है। तुम्हारी नौकरी खत्म होगी, तुम्हारा कॉलेज खत्म होगा जो भी, क्योंकि तुम्हारा कमिटमेंट है अपने आप से तुम्हें कंप्लीट करना है, तुम उसको कंप्लीट कर लेना और उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस में देखना यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा जो यहाँ से निकल के आएगा इस इक्विटी से, और हो सकता है कॉलेज खत्म होते होते हम हो जाए $100 मिलियन प्लस। एक साल लगना चाहिए आइडियली एक कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी को इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए। अगर वो सोशल इंटरनेट कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी बन रही है तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है। सो इसकी इक्विटी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, तो डिसीजन तुम्हारा इधर ही आना है। इससे ज़्यादा वैल्यू कोई और दे नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी तुम्हें इक्विटी नहीं देने वाला है जिस भी कंपनी में जाओगे, और जो कॉम्पनसेशन मंथली दे रहे हो उतना तुम्हें दे दूंगा। So that's not going to be a problem at all. So stay synchronized to this. Very soon, I am going to have my entire attention to these two. Right. Even with these two, I'm going to bring their attention to these two. Then this remains. Right. Yeah, with the vendor you guys are currently talking to. Yes. One person with their one effective vendor is going to keep creating this output. Right. The burden is on her to produce that product that you desire. Right. So that relationship is the two of you, you and her, and you can be anywhere because she's anywhere outside the country. Right. So I felt like yeah, this will be the right structure. Now, all of this is just product development. अभी तुम लोग इस लेयर पे हो, तो मैं और ज्यादा किसी बारे में बात कर नहीं रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं है, हजारों एप्स आती हैं अच्छी और मर जाती हैं, पता भी नहीं चलता किसी को कि आई भी थी। हमारे साथ भी वो हो सकता है अगर हमने बाकी कंपोनेंट्स पे ध्यान नहीं दिया, तो उनको भी अटेंड करते रहना। Manu was doing some research on different products that are on lines that see what is a market competition. Market competition of one's own company or product simply means हमने कुछ ऐसा बनाया है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स जो मार्केट में रखे हुए हैं इस चीज को अटेंड करने के लिए उनकी थोड़ी सी शेयर हम मार्केट का खाने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग उनके पास जो जा रहे थे या गए हुए थे या जाएंगे फ्यूचर में वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये है मार्केट कंपटीशन। तो जो ऐसी चीजें हैं जिनका हम, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे में अगर लोग आइडियाज यहाँ पे ब्लॉग करने वाले हैं तो हम बहुत सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स का ये वाला पोर्शन खाने वाले हैं कि आइडियाज को लोग लिखने medium.com पे जा रहे थे, ट्विटर पे जा रहे थे, अब यहाँ पे आने वाले हैं। तो हम उन सबको भी अपने मार्केट कंपटीशन में कैप्चर कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोगों को इस बात का हर वक्त ख्याल रखना है कि we have to be attentive to all that which is on the internet for the world of people that will be future entrepreneurs. We are called onlystartups.com. Right. So onlystartups.com means only entrepreneurs also. So only entrepreneurs. We have to attend to whatever is happening in the world of entrepreneurs in the world of consumer internet. Right. वो अटेंड करते रहेंगे तो हम पता चलता रहेगा हमें हमारे कंपटीशन क्या क्या है, इंस्पिरेशन मिलती रहेगी कि वो ये फीचर बड़ा अच्छा है। तो ये एक्टिविटी ऐसे ही करें। मैंने उसको बताया कि जब मैं सिर्फ प्रोडक्ट को आर्किटेक्ट करने में लगा हुआ था, जब मुझे पता नहीं था इससे भी ज्यादा भारी बात है ह्यूमन बींग्स को आर्किटेक्ट करना, तो अब मैं ह्यूमन बींग्स को आर्किटेक्ट कर रहा होता हूँ, साथ में जोड़ रहा होता हूँ, उस आर्किटेक्चर को लेकर होता हूँ जिसमें वो ऑपरेट करने वाले हैं। उससे पहले मैं एग्जैक्टली यही कर रहा था, आइसोलेटेड लैपटॉप के ऊपर चीज़ों को पढ़ता समझता लिखता, पढ़ता समझता लिखता, अपनी knowledge को about my market, which eventually expanded to everything that is consumer internet or just social internet. So वो मैं करने लग गया, सिर्फ इंटरनेट पे फ्लो करते हुए। एक एंकर मेरे साथ था, मेरा आइडिया जो सेंटर में था मेरे सारी एनालिसिस के, क्योंकि हमेशा कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। रिलेटिव टू व्हाट, तो रिलेटिव टू व्हाट का आंसर मेरे पास आ गया था, द सोशल इंटरनेट। The social internet is going to be taking the leap from connecting people to having people to collaborate, because connecting हो गया, बिलियंस ऑफ लोगों को जोड़ दिया इंटरनेट ने। अब वो बातें थोड़ी करते रहेंगे एक दूसरे से, जोड़ने के लिए बातें थी,
बातें थी कोलैबोरेट करने के लिए, अब कुछ लोग कोलैबोरेट करना शुरू करेंगे, वो फेज आ रहा है इंटरनेट का। सो मेरे लिए वो है ब्रॉड व्यू, उसके अंदर मैं कुछ कंपोनेंट्स बनवा रहा हूँ लोगों को जोड़ जोड़ के। तो वो ये एक कंपोनेंट है ओनली startups.com, मेजर कंपोनेंट है, इसको अटेंड करना है और इसको तुम्हारे जाने के बाद इस तरीके से फिर भी अटेंड किया जा सकता है। तो फिर मैं और कॉन्फिडेंट हूँ ये कहने के लिए कि एक टीम आइडेंटिफाई कर ली है, 1/5 of the project goes to that team. Now that team needs to do its job. Till the time they don't get me 1,000 active users on all of these 3 products, I'm not going to attend to this topic. I have given them more than the reward they could have expected. Now I should be released. So that when I am released, then I will be able to solve the major and the most important problem of my friends in the other rooms, you know. So that time is coming now. If I have my attention spread across, like for example, there's a meeting to happen at 7 p.m. In that meeting, if that meeting can be conducted without me having to utter a single word, where we are on each product, what is the each product, who are the consumers, who are the target audience, what are the next steps. It's a conversation, it's a thought, it's brainstorming happening. So nobody has to go in like thinking they have to be perfect. But if all this conversation is happening without my interventions, I would know exactly what I was looking for is done. डेट 20 की थी लॉन्च की, या वो अगले महीने 20 की हो जाए, मेरे लिए ये ऊपर की स्तर की प्रॉब्लम है। जो बुनियाद है वो कुछ और है। वो बुनियाद ये है कि मेरे बिना अटेंड किए अब गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो फिर मैंने कर लिया जो करना चाहिए कोई ग्रोथ के लिए। लीडरशिप का मतलब ये होता है, सब कुछ थोड़ी करना होता है। So one of the things actually want to mention, are you planning about having an in-house team of developers? क्योंकि नहीं, मुझे वो ब्रेन में नहीं कॉन्फिडेंस दिखा, मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ। तभी तो मैं in-house team कर रहा हूँ। वो नहीं कॉन्फिडेंस है जो फॉर एग्जांपल बोलते हैं, जितना मैंने रैंडमली वर्क किया है वो कभी भी वेंडर्स पे आपको मिलेगा। वो है, हाँ। Vendors are not desiring your growth, they're desiring their money. Right, understood. They will say whatever कि consumer first and this and that, उनके लिए उनका पैसा पहले महत्वपूर्ण है और वो पैसा उनके लिए बढ़ता रहता है जैसे वो और लोगों के साथ काम करने लगते हैं। तो फिर जितने लोगों के साथ काम करेंगे उतना कम हम पे ध्यान देंगे। तो ये वेंडर का हमेशा सीन होने वाला है। इसलिए बट वो जो टीम बिल्ड होनी है वो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, किसी को उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी इसीलिए इन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है जो मैं यहाँ एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव और पूरा ऑल होलसम व्यू, जैसे इवेंट हमने कंडक्ट किया, तो क्योंकि मेरे पास ये विजडम आ रहा है अनुभव से, क्योंकि सब टाइप के टॉपिक्स को अटेंड किया है, एंटरप्राइजिंग रहा तो कॉलेज में नेचुरली इवेंट्स भी किए होंगे। तो मुझे पता है कि इवेंट को एंड टू एंड करने के लिए सॉफ्टवेयर से ज़्यादा उस वक्त उस मोमेंट पे जिस वक्त वो होली की पार्टी होनी है जिसमें लोग भांग भी पीने वाले हैं, तो उस वक्त उसको इस तरीके से अटेंड करना होता है जैसे सॉफ्टवेयर को नहीं अटेंड करना होता है, जब तक वो सॉफ्टवेयर इतना बड़ा पूरी दुनिया के लिए ना हो जाए। सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस हो सकते हैं, बस अब होली में इवेंट चल रहे हैं, लोग भांग भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, मार भी हो सकती है, गुड़गांव है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। वो 9 घंटे सिर्फ 9 घंटे नहीं होते, 90 दिन की दिन रात एक करी हुई मेहनत होती है टीम की, तब वो 9 घंटे पार्टी के होते हैं। तो वो इवेंट्स करने की काबिलियत है, होलसम व्यू कर पाओगे चीज़ों को। कोई भी चीज़ अगर एंड टू एंड कभी भी लाइफ में की है ढंग से, तो फिर वो काबिलियत आ जाएगी एंड टू एंड देख पाने की, जो कि अगर इस टीम के पास है, जिसको मैं 20% दूंगा ओवरऑल advisornk.com का, जिसके अंदर ये चीज़ बना के उन्हें देनी है, तब तक मैं advisornk.com पे कुछ नहीं करने वाला हूँ। पहली चीज़ मेरी बन के आनी चाहिए और ये advisornk की पहचान बनेगी। advisornk.com कह रहा है कि ये जो आपके एडवाइजर / टीचर है, ये पूरी दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स के टीचर हैं। अभी वो सारे इसके माध्यम से उनको पाएंगे, इसलिए एडवाइजर टू एवरीबडी, एडवाइजर टू एवरीबडी। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स नाम नहीं मिला। राइट, advisornk doesn't sound like someone, ना? So advisornk is actually not consumer facing. See, consumer facing is this. Actually, even this brand, understand the importance of every word I'm saying. Only startups.com is also not consumer facing. Okay. Only startups.com is facing the human resource that we are hiring. Okay. The language to be laid on this web page should be inspiring to the human resource we are hiring. Right. That is the status quo, that is the need of that topic. All other products will be their independent websites, independent brand, they will be facing the consumer. Consumer doesn't care about who's the holding company. You understand? So
these two, you can completely ignore this. This is only for what audience I'll tell you. It is for the audience. अगर ये human resource के लिए बन रहा है, human resource पूरी hiring हम क्या करने वाले हैं entrepreneurs के लिए, यानी पूरी language products के through, services के through, सुंदर से ऑफिस के अंदर बैठ के ये सारा जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये only startup.com में दिखाया जाएगा human resource को, ताकि human resource समझ पाए मिशन ओरिएंटेडनेस, किस मिशन पे आ रहे हैं हमारे साथ। प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज हो रहा होगा, ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करने में पावर और वेल्थ देने वाले हैं हमें। तो उनको तो एडवाइजर चाहिए ना, उनको एडवाइजर चाहिए कि ये हमारी पावर है, इसको मैक्सिमाइज और कैपिटलाइज करवाओ। तो मैं कहूँगा लो कर लो, मैं आपका एडवाइजर बन जाता हूँ, कैपिटलाइज करवा देता हूँ। तो ये वो ब्रांड उन लोगों के लिए क्रिएट हो रहा है, तो ये 10 लोगों तक पहुँचेगा, वो 10 बड़े महान important handshakes होंगे। तो कहेंगे अच्छा एडवाइजर है के means somebody we are meeting who has a potential to be an advisor. So when you become their person, their advisor, then they are not just coming in for powering you. This is a condition to them. कि मेरे को यहाँ power करो। आपका wealth मैं multiply करता हूँ यहाँ से। तो मेरे ये कहने में अगर 2 चीजें फैक्टर है, एक तो फर्स्ट आपने सी मेरा शेड्यूल कैसे हो रहा है, ना मेरा शेड्यूल कैसे है, एंड द थिंग इज जो 1 घंटा दे रहे हैं यार, 1 घंटे 1.5 घंटा होगा, मुझे उसमें लैक नहीं होना। सो जो मैं अभी फोकस या जो डेडिकेशन दे पा रहा हूँ, आई नीड टू गिव, बिकॉज सी मेरे लिए बाकी से मैटर नहीं करता है, सेकंड थिंग मैटर करता है, हो गया मैं वर्किंग ऑन समथिंग ना, मुझे वो उतना दे पा रहा हूँ कि नहीं, अदरवाइज वो इनपुट इस वजह का 1 घंटे पे ही फोकस करो। 1 घंटे में तुम कैसे आउटपुट निकालोगे, उसका एक ही तरीका है। तुम्हारे पास 2 लोग हो जो तुम अटेंड कर रहे हो पूरी कमिटमेंट से, तो तुम आउटपुट निकलवा लोगे। जैसे मैं 15 टॉपिक्स में आउटपुट इसलिए निकलवा पा रहा हूँ कि हर टॉपिक में मेरे पास 2 लोग हैं जो मुझे पूरी तरीके से अटेंड कर रहे हैं उस टॉपिक पे। तो मैं तुम्हें 2 लोग दे रहा हूँ, ये अटेंड करेंगे, तुम्हें इनको बोलना है, तुम्हें खुद नहीं करना है कुछ। जाने के बाद तुम्हें खुद कुछ नहीं करना है, तुम्हें इनको बोलना है। ये बोलेंगे, मेरे को आएंगे कि गुरुजी वाला चीज नहीं हो पा रहा है, हम कम्युनिकेट किया लेकिन नहीं हो पा रहा, तो मेरे पास आप ना आए, अब वो तुम्हारे पास जाए। तो ये रिलेशन चाहिए, तब 1 घंटे में कर पाओगे। अगर इंडिविजुअल की तरह सोचोगे जैसे अभी तक सोचा, फ्रीलांसर्स भी वैसे ही सोचते हैं, सोलो प्रोप्राइटर्स भी ऐसे ही सोच, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर्स ऐसे सोचते हैं जैसे मैं सोच रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे, मैं अकेला नहीं हूँ। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर्स जितने हैं दुनिया में, उन्होंने ऐसे ही सोचा कि हमें इंस्ट्रक्ट करना है। So time is not a factor. No, not very time. Not at all. Not at all. सिर्फ ऐसा करना है, ये सब कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मैं रिक्रूटमेंट के लिए I'm onboarding somebody and they said can it be remote and hybrid combo? I said no. It would be exactly what you want. I don't understand remote, hybrid. I don't understand any of that. It would be if you want to be outside of India, you want to work from there, work from there. I don't care about any of this bullshit about where you are located. I care about outcomes. If you can give me outcomes, don't talk about remote, hybrid, can it be this, that. मेरे को किसी को बोलना भी नहीं पड़ता है, मैं पहले ही जता देता हूँ ये चीज़ कि मेरे से आउटकम मिलेगा। आउटकम मिलेगा तो उतना ही चाहिए था इंसान को ये थोड़ी चाहिए कि आप आके अटेंडेंस दो अपनी। ये करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आउटकम निकलवाना पड़ रहा है। अगर दिख रहा है कि आउटकम आप दे दोगे तो ना टाइम फैक्टर है और ना लोकेशन फैक्टर है, सिर्फ दिखना चाहिए तुम आउटकम दे दोगे। आउटकम दे दोगे तो 500 चीज़ें करो एक साथ, एक दिन में अपनी डिग्री भी लो, ये भी करो, वो करो। लोगों को डेलीगेट करना सीख जाओगे तो एक्चुअली एक दिन में 500 चीज़ें कर पाओगे। तो इसलिए एक जगह एक टॉपिक। See, I will do my schedule in next few days because I'm planning to move there. So now मेरा 1 तारीख से हाउस हंटिंग भी होगा after lectures. I'm planning to move there because जहाँ मैं मूव हो गया ना, फर्स्ट ऑफ बैचलर्स को घर नहीं देते, तो वो थोड़ा तकलीफ है। हम लोग वही उसको सॉर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक बार फ्लैट मिल जाए, 3 जन हम लोग, तो मेरा वहाँ से कॉलेज 15 मिनट में, तो मैं ट्रैवलिंग बचा, तो वो है, तो उसका काम हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, तो आई नीड टू गिव टाइम। हाँ, या बस मेरा पूरा स्केड्यूल समझ गया तो है। And the second thing is some motivating factor. अभी आप कैसे कर सकते हैं? Some motivating factor? Yeah, I can give you some cash monthly. Right. If that would motivate. I can understand. If I want to give full time, ये सब नहीं है. I can understand. Unless I want to give full time. Yes. Post even final placement के time कैसे कर सकते हैं? If I have let's see the product grew. जैसे what I'm planning कि ये प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, पहुँच गया. So I know okay now I can rely on this product for my future. तो उस टाइम पे मैंने कैन अप्लाई टू इट, तो उस टाइम पे आगे वी कैन मूव, बट देन तब तक आई वांट टू नो कि मैं उतना दे पाऊंगा कि नहीं टाइम।
वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम करना शुरू करोगे। नहीं, शेड्यूल से नहीं, डे ऑन डे अपने आप को ऑब्जर्व करके दे पा रहे होगे तो दे लोगे, नहीं दे पा रहे होगे तो नहीं दे पाओगे। वो पता चल जाएगा ऑन द गो। राइट, हाँ, चीजें करके पता चलती हैं। वही है। सेकंड थिंग इज अभी कोई और है क्या जो टेक्निकली भी साउंड हो, जो अपने साथ हो? हाँ, बहुत लोग हैं हमारे पास, उसकी प्रॉब्लम कि नहीं। मुझे अभी मैं उन भारी लोगों को हल्के लोगों से बात नहीं कराना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम हल्के हो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी ओरिएंटेशन मेरे नजर से हल्की है। तुम्हारी ओरिएंटेशन इनकी तरह होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट कमिटमेंट। बिकॉज़ मैं दुनिया चेंज करने वाली बात कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ। अनफॉर्चूनेटली आई कांट डू दैट। करेक्ट, आई हैव कमिटेड दिस। तो इसलिए अनफॉर्चूनेटली मैं तुम्हें उन भारी लोगों से कनेक्ट नहीं करा रहा हूँ, No. क्योंकि उनको लगना चाहिए कि ये भारी लोगों की टीम है, हम और अटेंड करेंगे लोग। I could once I finish the commitment I have had. Correct. See, I'll be very honest. This commitment is for my parents. Correct. They have supported me a lot. Correct. This is for them. They are like संकेत जो करना है करना। Still they have a lot of freedom. You एक बार सुना कि ये एक बार खत्म कर दे, जो करना है वो कर दे। This is commitment to them, and I respect them a lot. So this 2 years of commitment I have given is for them. So I have to finish this. No problem, no problem. And they have put all maybe their trust and faith into me. Sure, कभी-कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो तुम उनके उस और प्रेम और उनकी खुशी को पाने के लिए अपने 2 साल आज तक मैं जो कुछ भी किया है, जो I've run my businesses, I have dropped out of once, they have supported me. So ये इस वो ज़्यादा खुश होंगे अगर तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में हो जाए 6 महीने में, 1 साल में कुछ अच्छा काम करके, तो कॉलेज डिग्री से नहीं मिलेगा। उनको ज़्यादा खुशी दो, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन तुम उनको कम खुशी देना चाहते हो तो कम दो। मैं क्या करूँ, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो तुम उनको कम खुशी दो। मेरी इच्छा होती तो मैं उनको ज़्यादा खुशी दिलवाता। जैसे इसके पेरेंट्स की इच्छा थी कि ये कॉलेज करे कंप्लीट, इनको समझ में आ गया, उनको भी बाद में समझ में आ गया यार हम तो कम खुशी की तरफ बढ़ रहे थे, इनको इनका गुरु मिल गया, उसने तो इनको और बड़ी खुशी दे दी। तो वो चीज़ तुम दे सकते हो अपने पेरेंट्स को, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही होता है। पेरेंट्स अगर जागृत अवस्था के लोग होते इस भारत में तो बहुत अलग होता भारत। उनको पता भी नहीं है कि कॉलेज नहीं, एक और एक वाली जुगल मिलनी चाहिए हर इंसान को लाइफ में। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज वर्किंग आई हैव मेड लॉट ऑफ मनी, सो दे आर लाइक उनको नहीं फर्क, दे आर लाइक संकेत गेट सम स्टैबिलिटी, दैट्स ऑल। आई कैन मेक मनी, को फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल एट दी 2012 आई वाज वर्किंग एज अ पायलट, नॉट पायलट, वी आर piracy. I was uploaded. We are stable now. If the concerns get stable, you can be stable. So I just wanted to खत्म कर। उनको पता है कि ये कुछ भी करेगा फर्क नहीं पड़ता है, लाइक just give us a piece of money, तेरे पास एक डिग्री and then we like sort जो करना है वो ठीक है। ये इसके पेरेंट्स की कहानी थी, सब हमने सॉर्टेड सबको इसने कोशिश की, इसने बताया दिखाया, देखो सदगुरु क्या बोल रहे हैं कॉलेज डिग्रीज के लिए, देखो ये को क्या बोल रहा है, वो इलॉन मस्क क्या बोल रहा है, ये सब क्या बोल रहे हैं, देखो गुरुजी क्या बोल रहे हैं। बस तो वो कन्विंस हो गया, और इतना कन्विंस हो गया कि सिर्फ यही नहीं, अपने छोटे बेटे को भी भेज दिया कि तुम भी छोड़ो। फिर ये डे और डे मुझे शेड्यूल देखना था, आई कैन कंफर्म एंड वी कैन सी कैसे करते हैं, क्या टाइम है कैसे, ठीक है। Like Albert Einstein said, or somebody said that the only thing that is coming between my progress or something like that, I'm not quoting him, but he said is my education degree, which is absolutely true. This chase is the chase which is coming in the way of the success of most of the youngsters on the planet. It depends person to person. If a family are educated and successful in what? I told you, they are highly successful. All CEOs and CXOs, all because of education. So they always prioritize that. Yeah, sure. All because of not education, knowledge and wisdom. Knowledge वो भी है, but they are very. उनके टाइम में वही तरीका था दोस्त। हाँ, सारे फैक्टर्स को जब कुछ एनालाइज कर रहे हो तो उसको नकली मत एनालाइज करो, उसको सच्चाई से एनालाइज करो। तो सच्चाई से पाओगे कि उनका नॉलेज और विजडम का तरीका वो ही हो सकता था, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में नहीं थे वो लोग। इंटरनेट की दुनिया में थोड़ी हो सकता है वो तरीका, राइट? इंटरनेट की दुनिया में तरीका, बट क्योंकि हम इतने कंडीशन हो चुके हैं कि हम अपनी फ्री विल खो दी हमने, फ्री विल। खैर कोई बात नहीं, इसीलिए तुम्हारे को 1 घंटा बोल के ये चीज़ बताई कि क्योंकि तुम्हारे पास बाकी के घंटों के लिए कुछ है जो तुम्हें करना है, तो तुम्हारे पास 1 घंटा है, 1 घंटा है तो क्या कर सकते हो, छोटी सी चीज़ संभाल सकते हो। वो छोटी सी चीज़ छोटी सी इसलिए है क्योंकि पूरी टीम मिल रही है, वेंडर्स मिल रहे हैं कम से कम, लोगों के पास तो वो भी नहीं होता है। वेंडर्स मिल रहे हैं, काम आगे बढ़ रहा है, विजिबिलिटी पाएगा तो हम इधर हायरिंग बेटर और कर पाएंगे, तब और मजबूत टैलेंट आएगा। मजबूत टैलेंट तक सारा काम खुद संभालने लगेंगे। मजबूत टैलेंट लाना आसान काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम है। तो एक तरफ मैं वो हैंडल करने वाला हूँ, इसलिए मैं इस डे टू डे से फ्री होना चाहता हूँ। मुझसे कोई सवाल भी ना पूछे प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी 3 पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को मैंने डाल दिया है जिनको समझ में आती है बात,
Why am I needed in the project? Of course, I am needed because they're reporting to me. Right. So if they disappoint anybody, I am the one who's disappointing. So then I'm needed, but only for facing that disappointment of others, facing their criticism of others. I'm not needed in any other process. Still 1,000 users on each. Right. Is that clear? You be like that, you do anything in life, you will anyway have this reward coming from here. Right. You can just sit and fucking learn this one day, decide that you love music and you want to make music. Keep making music, you'll have some stocks. That would be happening to very, very lucky people in the world, that they could do whatever they desired, but they had a little bit of asset taking care of their life. I have known many people, for some, it was their grandfather's will transferred to them, that they bought a caravan and started traveling the world without having to worry more. And they must have done something right for that to happen in their life. And they lived their entire life with what grandfather has given them. For and me, then, like that, it was the COVID. That's when I got to attend the stock market. So stock market is looking after your finances, right? Yes. Yeah, that's the way. So you can be very, very creative. I don't know why you're stuck in college. But it is because of you that this video will reach a lot of youth, and they will decide, oh yeah, we may be also doing the same mistake. So maybe something will come out of it. Something not nice for you, but nice for some youth. Like these guys who dropped out. That's it, man.